Speak your heart, follow the ishq, and let excellence do the rest. Hello, everybody, and welcome to the Leena Shah Show podcast. Of course, shows के director Sohail is right behind the camera. और आज मेरे साथ इस मंच पे कौन गेस्ट है उनके बारे में आपको बताती हूँ. He came here with a doctor's degree, the heart of a poet, and the soul of the dreamer. He is a true living example of the American dream come true. Dr. Asaf Riyaz Qadeer. इससे पहले आप सब जानते हैं डॉक्टर आसिफ रियाज कदीर को ऑफ कोर्स फॉर ऑल द कम्युनिटी इवेंट्स दैट ही डज कायदे आजम फाउंडेशन के हवाले से जानते हैं ही इज सच ए सेलिब्रेटेड डॉक्टर उस हवाले से आप जानते हैं ही इज़ अ philanthropist एज वेल कम्युनिटी लीडर हैं पोइट हैं ऑथर हैं एंड ही इज़ ऑलवेज ट्राइंग टू मेक द लाइव्स ऑफ पीपल अराउंड हिम बेटर मैं पर्सनली जानती हूँ डॉक्टर आसिफ रियाज कदीर को एज अ पेट्रन एज अ फ्रेंड and also as a guide and as a mentor. Every time that I've spent with Dr. Qadeer, I have learned so much. Even he doesn't know how much I've learned from him. He does know that people around him learn from him and from his excellence as well. एंड जब भी मैं अपने फेवरेट लोगों को इंटरव्यू कर रही होती हूँ तो आई गेट वेरी हॉट एंड स्वेटी इसलिए इस वक्त स्टूडियो में किसी को गर्मी नहीं लग रही है मुझे गर्मी लग रही है विदाउट एनी फर्दर अडू आज का ये पॉडकास्ट इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस बुक ये कौन सी किताब है क्यों है मेरे हाथ में इस पे बात करने से पहले आई हैव टू वेलकम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम डॉक्टर कदीर कैसे हैं आप Leena, it's always pleasure to meet you. I have थैंक यू heard you for 30 years in Houston, never met you. Only when you got married to a friend of mine that we had the pleasure of meeting you. And since I have met you, I have found out that you have a story to tell. And that story is going to be out today. ओह ओके ओके सो बिकॉज डॉक्टर कदीर की जो अनकही टीवी है ही हैज अ पॉडकास्ट ऑफ हिमसेल्फ एज वेल पिछले 2 साल से ही इज डूइंग अ वेरी सक्सेसफुल पॉडकास्ट तो मुझे लग रहा है दिस इज गोना टर्न अराउंड इट्स नॉट टॉकिंग टू हिम इट्स गोना बी माय इंटरव्यू इन द एंड डॉक्टर कदीर सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस बहुत बहुत मुबारक हो दिस इज योर एब्सोल्यूट जेम ऑफ अ बुक इसके पहले मैं बुक कवर के बारे में आपको बता दूं इफ यू लुक एट इट इट इज जस्ट अमेजिंग इट इज जस्ट सो ब्यूटीफुल there is a message back there by Dr. Jeffrey McGee. The American Journey, the Great American Experiment continues, Land of Opportunity, and Immigrant Physicians' Reflections on Freedom, Opportunity, and the Enduring Promise of America at its 250th anniversary. Wow, this looks beautiful. Well, Lena, I always believed when I came to the United States that America has a promise. I wanted to see what is this promise of to America. What is the opportunity and the land of opportunity in the United States? And I have heard about this American experiment, the great American experiment which continues. And I thought that let's see, it is continuing for me. Now that I am realized on the 250th anniversary of United States of America, this is not going to end for another 250 years. Wow. And the reason is because you and me, people like us, going to pass this baton to the next generation. Mm-hmm. The land of opportunity, the great American dream, is because this union is not perfect. Mm-hmm. America is not perfect. Mm-hmm. But it people like you and me and the people who live here make it more perfect. Mm-hmm. We make this union making it more perfect Mm-hmm. or perfecting it. Mm-hmm. And in this process of that, this great American dream continues Wow. because the next generation is going to take to the next height. Mm-hmm. That's why I say the America is not perfect. Mm-hmm. But America is resilient and is resilient because of people like us, the Mm-hmm. immigrant, Mm-hmm. who give another life to go to another stage Mm-hmm. to keep the promise of America alive. Wow. Wow, that is such a profound insight that we do come here for the American promise, but it's actually us who are keeping the American promise alive as well. That's so empowering at the same time. No, it's empowering because I have lived through it, I have experienced it, I have felt it. And this is from my heart. Mm-hmm. I'm not saying that I'm American as my adopted home, Mm-hmm. although my motherland is Pakistan. Mm-hmm. But this, what I have seen in the last 40 years being here, is the one I am describing. Mm-hmm. What is the American dream? American dream is not there's a dream that I'm going to get it everything.
It means you work hard, you work honestly, you diligently. What you take from this society, in the end, when you have achieved, give back to the society. And Wow. in this process, you make the America great. And the people who live here believe in that the promise of America is alive like that. And the opportunity you get is not because they are given to you. The opportunity you get it because your hard work, your intellect, and your perseverance. And if you continue that, success is here, and success is given to those who work hard. This is the promise of America. That's Mm-hmm. why it's a land of opportunity. Mm-hmm. That's why this is a great American experiment which continues. Wow, wow, that is amazing. I think कि आपकी किताब पर The Great American Experiment Continues, Land of Opportunity, The American Journey. This is like जो आपने अभी बयान किया उससे यही एहसास हो रहा है कि this is actually all of these are a thesis on its own. और जब कोई शख्स नया नया अमेरिका में आता है as immigrant, they do not understand. वो तो आते हैं सिर्फ okay fine, complete your education, make a career, be successful. Parents are expecting you to do that. लेकिन एक point ऐसा आता है जहां पर when you become that successful, then you are searching for identity and belonging to something, a community. But then again, you are so far away from home, जो community आप जानते थे. Mm. So a person like yourself, a man who carries two flags in his heart, Right. Pakistani flag and the American flag, how do you see this identity? Help our viewers shape who are maybe confused कि वो पाकिस्तानी है कि अमेरिकन है, या वो दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे हो सकते हैं. Help them understand this. देखें, जो मेरी पहचान है ना, Mm-hmm. जहाँ जहाँ भी मैं खड़ा हूँ, जिस जमीन पे भी हूँ, मेरी पहचान असल में पाकिस्तान है, Mm-hmm. क्योंकि पाकिस्तान मेरा मदरलैंड है. Mm-hmm. यही मेरी पहचान है. Mm-hmm. लेकिन जब हम पाकिस्तानी अमेरिकन बनते हैं, we adopt American citizens, which is our now our adopted homeland. Mm-hmm. American citizen and being American is the beauty. It does not conflict with my motherland. It embraces my motherland. Mm-hmm. The friendship between America and Pakistan is a testament to that. Mm-hmm. So there is no conflict. यही एक बहुत बड़ापन है अमेरिकन का कि ये क्लोज सोसाइटी नहीं है. Wow. यहाँ से मल्टी कल्चरल सोसाइटीज आके मर्ज होती हैं, Mm-hmm. इकट्ठे काम करती हैं Mm-hmm. with the common goal of making money, making progress, and doing things together. But it does not stop us for our love for motherland. Mm-hmm. इसीलिए आप पाकिस्तान से जब आते हैं तो अब ह्यूस्टन में देख लें, Mm-hmm. 104 मस्जिदें हैं. Mm-hmm. आपके पे कोई पाबंदी नहीं है, Wow. आप जो मर्जी करें. यू Wow. कैन गो टू, आई हैव फ्रेंड्स हु आर चर्चेस, अफजाल फरदौस, Mm-hmm. हम उसके चर्च में जाके उसकी सफाई करते हैं. दिस इज बीइंग अमेरिकन, Mm-hmm. दिस इज बीइंग पाकिस्तानी अमेरिकन. Mm-hmm. That we don't feel bad about doing two cultures, two countries living together in the same soul. That's why I openly say America is my adopted homeland, Beautiful. but my motherland is Pakistan. Wow. Always. Beautiful, beautiful explanation of that. और किस तरीके से आपने कि ये dual identity को, जो कि dual really नहीं है, it is just one identity आप carry कर सकते हैं. And I would, they always talk about कि you should become a person, a good person, and show अपने एक्शन से आप लोगों को इम्प्रेस करें. सो अगर हमारी कम्युनिटी का, पाकिस्तानी कम्युनिटी का इन अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका, अगर कोई ऐसा नुमाइंदा है जिसको कि मैं प्रेजेंट कर सकूं, एक ऐसा पाकिस्तानी अमेरिकन हु इज आइडियल, आप उसके कैरेक्टर को देखिए, आप उसके कामों को देखिए, आप उसके वेंचर्स और प्रोजेक्ट्स को देखिए, तो आप बहुत प्राउड महसूस करेंगे और आप देखेंगे कि पाकिस्तानी जो है वो उनका पोटेंशियल क्या हो सकता है. आई वुड डेफिनेटली नॉमिनेट यू, डॉक्टर आसफ कदीर. यू आर अ true Pakistani American who represents the best of Pakistani values and the American values. You know, this all this you are telling me brings to one simple thing. Mm-hmm. जो इंसान की जो परवरिश है ना, Mm-hmm. वो माँ की गोद से चलती है. सही. जिस माँ ने अपने बच्चे को सीधा कर दिया है बचपन में, Mm-hmm. वो सारी उम्र ठीक रहता है. Okay.
मेरे वालदा जो थी वो प्रोफेसर थी इंग्लिश की, हम्म बहुत पढ़ी लिखी औरत थी, हम्म प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश लाहौर कॉलेज में। चूंकि मैं एक बड़े ख़ानदान में उठा था, उन्होंने बचपन में से तमाम एरोगेंस के जरासीम जो थे ना, वो सर्जिकली रिमूव कर दिए थे। सर्जिकली ओके और मुझे उन्होंने खाकसारी, गरीबी और डाउन टू अर्थ एक आम इंसान बनाया है। वाओ मैं कहता हूँ कि उन्होंने मुझे असल में इंसान बनाया है। और जो अल्लाह ताला ने कहा है ना, अल्लाह ताला एक चीज़ को नहीं पसंद करता, तकब्बुर को। यस शैतान ने तकब्बुर किया था ना, अल्लाह ताला आजिज़ी, लोगों की खिदमत और ह्यूमैनिटी को बिलीव करता है। ट्रू और यही एक ऐसा चीज़ है कि आप खिदमत, अगर आप खिदमत अपने ज़हन में ले लें ना, कि आप पढ़ें लिखें पैसे कमाएं, लेकिन इंसानों की खिदमत करें, फलाह बहबूद की खिदमत करें, लिटरेचर की करें, तो मैं ये समझता हूँ कि आप फिर इंसान बनते हैं। इकबाल भी यही मर्द मोमिन की बात करता है, वाओ बल्कि मर्द मुकम्मल की बात करता है और खुदी की बात करता है। ये चीज़ें, सब चीज़ें एक चीज़ को ध्यान दी कि इंसान को इंसान बनना चाहिए। तो मेरी माँ की दुआएं हैं कि मुझे उसने बचपन में एक इंसान बना दिया था, वाओ जिसकी वजह से मैं आज तक जिंदा हूँ। इसमें एक और सवाल है मेरे पास जी। यू आर ब्लेस्ड टू हैव अ मदर लाइक दैट वो लोग जो कि इस वक्त देख रहे हैं मे बी नए नए अमेरिका आए हैं दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग हम्म, दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट अ वे एंड दे कम फ्रॉम लाइक humble families decent families but they are looking for clues कहाँ किस तरीके से हम क्या करें कि ये अमेरिकन ड्रीम हम भी रियलाइज कर सकें हाउ वुड व्हाट वुड यू से फ्रॉम ऑल योर लर्निंग्स के क्या कर सकते हैं वो जिंदगी में अगर एक दो चीजें आप उनको लाइक अ टिप कि वो हर एक पे अप्लाई करेगा जो सबसे बड़ी मैं कहता हूँ कि आपने अगर उड़ना है, हम्म परवाज करनी है बुलंद, तो परों से ना उड़े, हौसलों से उड़े। वाओ हौसला होना चाहिए। जिस चीज़ में हौसला हो, अगर किसी चीज़ के आप बना लें माइंड, तो उसके हौसला होना चाहिए उसको पूरा करने के लिए। फेलियर शुड नॉट बी एन ऑप्शन इन योर माइंड, सक्सेस शुड बी। उसमें आप सक्सेस मिले या ना मिले, आपके दिल और ज़हन में ये होना कि आपने पूरी भरपूर कोशिश ज़रूर की है। अगर आपने कोशिश पूरी की है, तो फिर आप कामयाब हो या ना हो, आप अपने ज़हन, अपने दिल में मुतमिन होते हैं। यही अमेरिका का लेसन है कि आप आएँ, आप अपने दिल से काम करें और उसके बाद देखें कि आपको कितनी सक्सेस मिलती है। लेकिन ये नहीं है कि आप अधूरा ना छोड़ें, आधे में ना छोड़ें, हौसला ना छोड़ें। हम्म Wow, I have never heard that before. मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द जो है क्रेडिट्स में मोटिवेशनल स्पीकर which you already are but like a an official designated motivational speaker because ये मैंने कभी भी नहीं सुना. Wow, what a beautiful thing to say कि आपने उड़ना है तो आपने परों से नहीं उड़ना, आपने अपने हौसलों से उड़ना है और अगर आप हौसले बुलंद रखते हैं तो सारी दुनिया आपके देखें, जेर है. हाँ, बिल्कुल सही है। मैं आपका जो इकबाल का शाहीन है, हम्म जो कि जवान कौम को एड्रेस करता है, हम्म बुलंद परवाज़, हम्म तेज़ नज़र, हम्म कोई आशियाना नहीं, हम्म घर नहीं है। कोई चीज़ जो है लोगों की मरी हुई नहीं खाता, खुद मार के खाता है। खुद मार का मतलब है कि हर चीज़ अपने हाथ से कमाएँ और हम्म मेहनत से कमाएँ। हम्म तो ये इकबाल के शाहीन का मतलब मोटिवेशन करना है यंग कौम को। वाओ और मैं ये समझता हूँ कि यही एक अच्छा रास्ता है कि आप अपने अंदर अकल पैदा करें, इल्म हासिल करें और उस तालीम को बुरुए कार लाते हुए आप अज़्म करें। हम्म जो भी अज़्म करें, उसको आप पूरने के लिए पूरी जद्दोजहद करें हम्म और दिल लगा के करें। हम्म कामयाब या ना हो, वो अलहदा बात है। आप तो जानते हैं ना कि माली का काम है मश्क भर-भर के पानी देना, रब का काम है कि फल फुलाना, लगाए या ना लगाए। तो हम्म वो आप उस पे छोड़ दें, लेकिन अपने हाथ की जो आपकी सोच है, हम्म कमाई है हम्म या अमल है, हम्म उस पे आप भरपूर ताकत लगा के एक दफ़ा काम तो करें, हम्म हौसले के साथ। हम्म लोगों के कहने पे नहीं, दिल के कहने पे। वाओ तो अगर आपका रिज़ल्ट अगर अच्छा आए तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह को दुआ दें कि उन्होंने आपका रास्ता आसान किया है। हम्म अगर नहीं है तो अपनी कोशिश जारी रखें। हम्म हम्म और यही एक कोशिश जारी करने का जो अमल है, हम्म यही एक हौसला है। वाओ यानी कि कोशिश जारी रखना ही हौसला है या बिकॉज सम पीपल गेट रियली कंफ्यूज यार डर लगता है वो कैसे हौसला पैदा करें बिकॉज ऑब्वियसली दिल में ख्यालात आते हैं, नहीं हुआ तो फिर कैसे होगा वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट लेकिन
कंटिन्यू करना ही बेसिकली हाँ हौसला हाँ है. हाँ. Wow, you put it so simply. Of course, आज हम बात कर रहे हैं about the new book that is out, The Great American Experiment, The American Journey, डॉक्टर आसफ रियाज कदीर की जो लेटेस्ट बुक आई है. 4th of July पे ये बुक जो है वो रिलीज है. अगर आप चाहते हैं कि you want to read this book, this is his story of realizing his American dream. Or I have had a chance to have a little peek in it, and I'm telling you that I am completely hooked to this book. आप जा सकते हैं Amazon पे और सर्च कीजिए The American Journey, Dr. Asaf Riyaz Qadeer, ASAF. Yeah, some people do make that mistake. So मैं इसकी clarify कर रही हूँ. उसके अलावा आप स्क्रीन पे भी लिखे हुए देख सकते हैं. Just search for it. The link for the book is in the captions as well. Just click it. Get the book. If you don't read books like this, but you read on Kindle, आप जाके Kindle पर भी order कर सकते हैं. So book is available on both platforms. The one of the thing which this the American journey, the Great American Experiment, this is an immigrant story. Mm-hmm. If you are an immigrant, doesn't matter which country you're coming from, this is your story that I have written. How an immigrant comes, how many difficulty he has, how much cultural shock he has, how much support system he does not have, how odd jobs he has to go in the beginning, and there is no cushion here. There is no mother and father here to comfort you, and you are on your own. And how you go through this and get into the American dream, and how you work hard and suddenly you find the results. That's why, when I was supporting Congressman Sheila Jackson Lee, a lot of my friends asked me tactically, why you put your all eggs in one basket? Mm-hmm. Why you support Congressman all the time and no much others? Mm-hmm. Why you put your all eggs in one basket? And I say, they hatch very fast. That's why I say put your all efforts in American dream. They hatch very fast. Wow. The results come very fast. Oh my goodness. And I have put down all my experience in this book, A Journey of an Immigrant. And it's specifically, I want to be part of the American fabric to celebrate 250. I don't need to celebrate only 14th of August. I need to celebrate 4th of July, 1776, 250 years ago, when America was here. And remember in that journey, when America was came into being in their independence, some of the Muslim people supported and recognized it. The first person who recognized was Muhammad III from Morocco. Mm-hmm. And then later on, Benjamin Franklin related to the efforts which Hyder Ali did. Mm-hmm. Hyder Ali from Mysore was the father of the Tipu Sultan of Mysore. Mm-hmm. And he resisted the East Indian Company, who was then the English, and he was fighting their war there, and America was fighting the British in the United States of America. Mm-hmm. And because the British thought that there will be it was more important India, that Mm-hmm. it was a golden egg, they diverted their more efforts and their ammunition and personnel to India, fighting the Hyder Ali Masur. Right. And there was less effect was there in America. That's why America won, because resources, and that was Wow. recognized. Wow. The American recognized Hyder Ali by putting a ship in his name, the Wow. Hyder Ali ship, who later on, few years later, captured the British ship. And I tell you, the Muslim story in the creation and recognition of America is a part and fabric of American story. Absolutely. And that's the beauty of 250 celebrating of a Muslim immigrant to this country celebrating 250th anniversary of United States of America. Oh, that is That's amazing. why it's American journey. That's why it's a land of opportunity. And that's why this is great American experiment continues by the immigrant who has their baton, who are going to pass to our generation. Okay, passing on the baton to the next generations. और यहीं से मैं अपना next question is that there are people like you and I जो कि इस country में आए, हमने अमेरिका को choose किया. There is a whole generation that is born in this country. They never got the opportunity to choose America over another country. They have American accents, kind of, sort of like a Pakistani soul or a Desi soul.
what message do you, as someone who had the opportunity to choose America, give to the younger generation? They should all understand why we came here Okay. and what we did here. And they should understand that they have the opportunity of using the educational system, which is the best in this country. Mm-hmm. 10 top universities of the whole world Are in here. United States of America. Mm-hmm. Every big educator in the whole world come to these universities. Mm-hmm. And here we are, this opportunity right under your hand in your step. Use this Mm-hmm. and become where your parents have left the Bhutan Take to it move forward. forward. And my son, both son, has taken that. Both of them went into the good universities here. Mm-hmm. Both of them went to Baylor College of Medicine. Mm-hmm. Both became doctors. One became an anesthesiologist Mm-hmm. and pain specialist. He Mm-hmm. is working the UT as assistant professor. Mm-hmm. My other son became the orthopedic surgeon and Okay. sports medicine, Oh, wow. and he has his own practice in Houston. And they have learned from their father one thing: volunteering for the poor people. Okay. 3 weeks ago, for 3 weeks, my son was operating in Palestine for the poor people in Palestine. Wow. And he volunteered there and did that. And when he was leaving, he said, Dad, I'm going there. Give me your blessings. I said, sure. For the sake of humanity, if your heart is to go and to Palestine and to do good for those people, orthopedic surgery, choose it, because this is the best way you can help the humanity. Mm-hmm. And did that, mashallah, he came back. Wow, He's mashallah. going to give a lecture on this, his experience in Palestine doing orthopedic surgery. Wow. Because from So the stories we've heard, going to Palestine, even to perform medical procedures, is almost like it's going to war, actually, because of what the news that we have heard, the scene we have seen, especially when it comes to the medical staff and to doctors, how they have treated them. I think I told him that the role of a doctor is the healing the humanity. Hmm. And the best part you can play for a person who needs the help and needs a specialized orthopedic help, if you go and help him there, you have done your job for the humanity. Right. And that's where the medical profession is. We are scientists, Mm-hmm. and we fight with our knowledge. Mm-hmm. We fight with our thought process. Mm-hmm. And I think the second generation who is here, they learn from their parents to do that. Mm-hmm. And I'm glad that the people who have born and grew up in America has learned from their parents to do good, so that they can pass the same thing to their children Mm-hmm. to do good. And I think if that happens, they have learned more than what we learned when we grew up. I agree with that. That's beautiful. Let's come down to the process. Mhm. How did you get this idea? कब आपने सोचना शुरू किया कि or is it a coincidence that you thought of writing it and you realized 250 years are coming? What No, happened? no, I used to get a lot of email from the Republican Party, Mm-hmm. Democrat Party to come and celebrate the 250th anniversary in Washington, D.C. Mm-hmm. And that was a very good offer to go there. Mm-hmm. That was me being an American citizen going there, Mm-hmm. watching the whole show. Mm-hmm. And I thought that I'm an immigrant. I need to put in immigrants' views. What is an immigrant view and what does he feel Mm-hmm. as a adopted homeland, America, Mm-hmm. on the 250th? What is my contribution? My Right. contribution should not be only go to attend it. My contribution should be my experience for the great land of America, the land of opportunity, Wow. the promise of America, the American journey. So I have been writing books. So this idea came in, Mm-hmm. and then I put my thoughts in it. Mm-hmm. This is purely written from an immigrant point of view. Mm-hmm. This is written from a physician point of view, how I got the opportunity. I got trained as a heart surgeon back home, and I got the opportunity of using the offices of my degree, which I got from King Edward Medical College
apply for a job to work with the biggest heart surgeon in the whole world, Mm-hmm. Michael E. DeBakey, Mm-hmm. Chancellor of the Baylor College of Medicine, Mm-hmm. pioneer of heart lung machine, Mm-hmm. who has invented almost all surgical instruments Mm-hmm. and did heart surgery. Mm-hmm. I applied him, and my friend said, Dr. Qadeer, what are you talking about? You're not going to get a job for him. But when I applied, I got a job from them, a Wow. land of opportunity. I worked with Jimmy Frank Howell, an extremely good surgeon. He did carotid surgery, bypass surgery. I happened to work with the program director, Stanley Crawford, Mm-hmm. a master aortic surgery Mm-hmm. guru, and of course, the legend, Michael E. DeBakey. Wow. And how many people can get an opportunity like that? Right. And that's the story I've written, Land of Opportunity, claiming that the America is not closed. If you work hard, because that's why my pitch, that I am a trained surgeon from back home. You don't have to train me right from beginning. I have already trained. I want to have further training. I want to enhance my skills. Mm-hmm. And that clicked to them that this is not a simple raw doctor. Mm-hmm. He's already a trained doctor and he can fit into our program. So I got in. So I stayed for several years with them. Wow. So this opportunity only can come in the United States, but didn't come easily. I worked hard for that. But staying inside the program for such a long time itself, it's a marathon job. Not many Absolutely. people can stay in, because if you make mistake, you get ejected out. Right. But Right. my perseverance, my heart in the job, reliability, and the truthfulness paid for. And that's why this book is here, the land of opportunity, that people like me could work with the legendary doctors like Michael E. DeBakey. Wow, wow, that's amazing. What an inspiring story it is. And Dr. Kadir, I have to say, what an inspiring personality you have. And obviously, in my experience, I have seen Dr. Kadir talk, जहाँ तक शायरी की बात आती है, philanthropic endeavors की आपकी बात आती है, when you're a community leader, Qaeda Foundation के जितने events होते हैं, I've heard you in so many different places and so many different dimensions of yourself when you talk. लेकिन इस किताब के ज़रिए और इस डिस्कशन के ज़रिए जो एक मुझे मे बी आई एम न्यू टू दिस बट मुझे एक एक नया डायमेंशन आपका सुनने को समझने को और उससे सीखने को मिला एंड विच इज सच एन इंस्पिरेशनल सच अ मोटिवेशनल स्टोरी गो ऑन अमेजॉन एंड ऑर्डर दिस बुक डॉक्टर कदीर हमारे पास जो है ना अभी हम शो के बिल्कुल अख्ताम पर पहुंचेंगे एंड एक हमारे पास आपके लिए छोटा सा सरप्राइज भी है जी जी एंड सरप्राइज ये है कि हमारे साथ स्टूडियो में जो हमारे डायरेक्टर हैं इस पॉडकास्ट के जी बिकॉज सोहेल नवाज इज राइट हेयर इन द स्टूडियोज एंड सोहेल आपका आपकी शक्ल आ रही है नजर लोगों को और आ रही है ओके फाइन सो यू कैन सी हिम ऑन द कैमरा एज वेल अच्छा ठीक है सोहेल ने एक आपका इंस्पायर हुए हैं वो आपकी शायरी से जी जी लॉट ऑफ पीपल डोंट नो अबाउट दिस बट ही इज अ सिंगर एज वेल जी और आपका जो एक शेर है वो गुनगुनाना चाह रहा है सोहेल प्लीज टेल अस कि ये शेर क्या है और क्यों इस शेर से इंस्पायर हुए हो और व्हाट यू गोना परफॉर्म डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। पहले तो ये कि और आपसे इजाज़त भी चाहिए क्योंकि डेफिनेटली मैंने जब फर्स्ट टाइम ये पूरी पढ़ी थी तो वो पढ़ने में और उसके बाद उसको फिर अदा करने के लिए दिल करता कि पूरी ही सुना दूं। जी उसमें से एक शेर मैंने जो है जी वो जी चूज किया और आपकी इजाज़त से, जी और जी इसमें कोई कोताही कोई गलती हो तो प्लीज। नहीं नहीं, बड़े शौक से देखें। मेरे लिए तो इज्जत की बात है कि मेरी शायरी आप पढ़ रहे हैं। मैंने लिखी आप लोगों के लिए तो लिखी है। जी जी जी, हाँ आपकी मोहब्बत है जी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। उसको मैंने थोड़ा सा गुनगुनाया है जी एक्चुअली, जी आई जी जस्ट ट्राई टू। तो वो इस तरीके से है कि हमी से महका है आसफ गया रियाज सुखन, दीवाने गैर में हम ये जुबां समझते हैं। वाह खूब। ये मेरी एक किताब जो पहले मैंने लिखी थी, उसका अनवान है रियाज सुखन, जी यानी नज़मों का, लिटरेचर का, उर्दू का बाग। तो उसमें उसका आखिरी है कि हम ही से महका है आसिफ मियाँ रियाज सुखन, दियार गैर में हम ये जुबां समझते हैं। वतन की खाक को हम कहकशां समझते वाह हैं, ज़मीन पाक तुझे आसमां समझते वाह हैं। गो बार बार
उन्हें इशारों से समझाया, मगर वो हमारी बात कहाँ कहाँ समझते समझते हैं? हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है! वेरी नाइस, वेरी नाइस। वाह वाह ये वाह! पूरी सुनानी चाहिए, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम मैं इसको पूरा तैयार करके फिर आपको इंशाल्लाह जरूर जी सुनाऊंगा। जी जी Thank you so much, Dr. Qadeer, for accepting जी this जी invitation to come to the studio. And हमने आज इस शो में डॉक्टर कदीर के बहुत सारे रंग देखे हैं, जी जी। और हमें एक एपिसोड ऐसा करना है कि जिसमें हम सिर्फ शेर व शायरी करें आपस में और उसको डिस्कस बड़े करें. लोग मुझसे पूछें डॉक्टर साहब के बारे में कि आप मेनी लाइव्स ऑफ डॉक्टर क्या है, हम्म. व्हाट इज द मेनी लाइव्स ऑफ डॉक्टर आसिफ कदीर, तो मैं हम्म. उन्हें हमेशा ये कहते हैं डॉक्टर आसिफ एक नाम नहीं है, एक कैफियत है, एक वाह. एहसास है। उसको महसूस करने के लिए आपको मेरे साथ बैठना पड़ता है। तो जब वो मेरे साथ बैठ के गुफ्तगू करते हैं तो फिर उनको ये समझ लगता है कि मैं क्या, हम्म. मेरा नाम सिर्फ नाम नहीं है। हमें आप महसूस करें खुशबू की तरह, वाह. जो बाहर आके देखी नहीं जाती, महसूस नहीं की जाती, मगर सूंघी जाती है, सही. जो फैल जाती है। वाह. तो मैं ये समझता हूँ कि मेरी प्रेजेंस में कई लोग इस चीज़ को महसूस करते हैं, और जो आपकी ऑरा और प्रेजेंस है, यही एक आपकी हकीकत है, यही एक आपका नाम है। ब्यूटिफुल. अब देखें, इंसान इतनी चीज़ें करता है, लेकिन इंसान डॉक्टर बनता है, ये करता है, वो करता है, लेकिन आखिरी उसकी जो, जहाँ उसको सेंचुरी मिलती है, जो उसे घर मिलता है, वो उसको कलम से और किताब से मिलता है। जैसे अल्लाह ताला का कुरान है, हम्म. उन्होंने किताब भेजी, हम्म. जैसे बड़े बड़े लोग अपनी किताब लिख के जाते हैं। हम्म. मैं समझता हूँ कलम जो ऐसी चीज़ है, हम्म. इसको आप लेके अपने साथ चलें और इसको कलम बंद करें किताब की सूरत में। हम्म. अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदा रहें, तो मेरा मशवरा है कि आप कलम लेके अपने बारे में लिखें, ताकि आप हमेशा के लिए अमर हो जाए। वाह. और ये किताब और कलम और जो लिखना है, यही हर इंसान की सेंचुरी इसके अंदर है। तो मैं ये आपको मशवरा दूंगा कि अगर आपने दुनिया में अपना कोई नक्श छोड़ के जाना है, तो इससे बेहतर और कोई जरिया कार नहीं। Wow, beautiful, beautiful things that you have said. I'm going to watch this podcast again and again. और इतने words of wisdom, pearls of wisdom जो आपने drop किए हैं throughout. और जो आज का ये podcast है, इसको हम end करेंगे एक rapid fire round के साथ. जी और इसमें जो है बातें, because we want to ensure that people watch it till the end. So rapid fire round में one word answers, हम्म, या तो yes or no answer है, या one word आप choose करेंगे जी उसको जी। answer करने के लिए. So, America, a dream or a reality? ड्रीम विद अपॉर्चुनिटी एंड रियलिटी। Okay. One emotion that describes your book. हार्ट फीलिंग। Stethoscope or the pen? Which feels more natural? पेन फॉर मी। Pen. Wow. Okay, that's a surprise for me. Is America still the land of opportunities for new immigrants? एब्सोल्युटली। Okay. Did you ever think at any point that go back to Pakistan? नो, Okay. पाकिस्तान लिव्स इन मी एंड आई एम हियर। Amazing. And poetry or prose? ऑलवेज पोएट्री, Oh, बिकॉज यू कैन से 20 पेजेस इन 2 words। absolutely, absolutely. और खास तौर पे उर्दू शायरी की तो क्या जी बात है. जी। And is America living up to its promise in 2025? यस एब्सोल्युटली। What freedom feels like? makes you that you are born free, you live free, and you can be anybody free. That's the beauty of American freedom that I have felt. Wow. And if you were to do it all over again, would you? I would do it again All of it. because I haven't had no mishap all my life. I would live in anywhere. I am the citizen of the world. Wow. Beautiful, amazing, amazing. What a great conversation, Dr. Absolutely. Qadeer. Thank you so much for coming to our studios. Looking forward to finishing this in before even the 4th of July. Amazing book. और आपको ये भी बता दी चलूं that many times जब आपको पास कोई ऑथर है, पोइट है, जो उनकी किताब होती है, उसका जो कवर होता है वो ग्राफिक डिजाइनर डिजाइन करता है, बट द कवर फॉर दिस बुक हैज आल्सो बीन डिजाइन्ड बाय डॉक्टर कदीर, एंड व्हाट एन अमेजिंग जॉब यू हैव डन. You know, one thing I want to say that I have met Leena Shah,
And after meeting her, she is the one who set my studio of Ankahi TV in my home. Thank you, sir. And since the time I met her, I have done so many things with her, especially related to podcast. She taught me how it can be loaded, uploaded, how can it be, voice can be enhanced. In many words, his 30 years of experience, I have benefited from that. And she has a potential that not many people have understood. One of the things which I am very good at is understanding what is the potential of people Hmm. and use them positively to enhance your own image. Leena Shah has depth of knowledge that she has brought to my doors, and goodness of her, she when she gets a goal, unless it start from A and finish to Z, she's on that subject. I try. This is the best thing I like in her because that's the way I am built up. When I start a thing in A, unless it is Z, I can never do a second thing. I can only do one thing at a time. Her this perseverance has really helped me in constructing and launching this book on Kindle. This book of Dr. Asaf Riyaz Qadeer is being launched. The big part behind is Leena Shah Oh my herself. God. Oh my God. So I don't want to disclose this to myself. I want to let everybody know Thank your you. contribution, Thank that you. you're a collaborator in helping me Thank you. and propagating what I do. मैं listeners को viewers को बता दूं, it was nothing but clicking a few buttons. The wisdom, everything is Dr. Asif Riyaz Qadeer, and it has been my honor and my privilege to witness his greatness in all the endeavors you do, and especially this book and the story of this I book. believe in the clicking of few buttons because I believe in the keyboard warriors. Their attention span is less than 3 seconds. True. And my time when I was there, our lesson span was half an hour. So they have progress. So if I don't catch up with them, understand that today the youth is hooked up to 7 seconds, and now in the last last polls are only 3 seconds. If I don't take help for few buttons like Leena Shah gives, I will miss the boat because you have to catch our youth in the 3 seconds. And this the journey, the America journey will be good for shelves only unless you go to those few click buttons with Leena Shah provides. I Oh want to wow. thank you for that. थैंक यू सो मच डॉक्टर कदीर, इतनी आपने इज्जत अफजाई की है और हमेशा आप मेरा हौसला भी बुलंद करते हैं. थैंक यू सो मच. पॉडकास्ट पे भी आए और जो है वो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताया. और जो इस वक्त देख रहे हैं, वी आर गोइंग टू मेक अ रियली रियली इंटरेस्टिंग रील आफ्टर दिस एज वेल, which we will be releasing on the 4th of July. So you have to brace up for that and keep watching. Stay tuned for that. बुक का लिंक आपने कैसे ये किताब खरीदनी है आपको कैप्शंस में मिल जाएगा, स्क्रीन पे भी आप देख रहे होंगे. Thank you once again for being I with want to us. tell the all Americans, the immigrants, Mhm. if you are really Americans, you have to speak and celebrate 250th anniversary of the United States of America. When you live here and you eat here and you make money here, praise the land who has given you this opportunity. This is the promise of America. You need to keep yourself for America.